Hello, students. Welcome to English learning. We have already completed two chapters, and those two chapters I hope that you have learned for the test. Our third unit is friendship and duty. This chapter is based on the human value friendship. Friendship is very important in our life. This value is shown very nicely in this chapter. The writer is William Sidney Porter. The writer is William Sidney Porter, and he is well known by the pen name O. Henry. पेन नेम मीन्स राइटर जो होते हैं वो अपना कुछ अलग नाम रखते हैं ना, दैट इज पेन नेम ओ हेनरी, एंड ही वॉज एन अमेरिकन राइटर. O. Henry's short stories are known for their wit, wordplay, warm characterization, and clear twist endings. Okay, why the stories are famous? Because they have wordplay, so many words, wit, wisdom, एंड वार्म कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टर्स जो होते हैं अंदर वो भी बहुत ही एक दूसरे के साथ वार्मली कनेक्टेड होते हैं. एंड क्लियर ट्विस्ट एंडिंग्स, और जो एंडिंग्स हैं जो रीडर्स ने सोची होती है उससे कुछ अलग ही होती है, ट्विस्टेड एंडिंग्स होती है. सो हिज शॉर्ट स्टोरीज आर वेल नोन. He was born on 11th September 1862 in North Carolina and died on 5th June 1910. When was he born? On 11th September and died on 5th June. From December 1903 to January 1906, O. Henry wrote a story a week for the New York World magazine. He also wrote the stories for World magazine and published several short stories in other magazines. Some of his famous stories are The Last Leaf. This is the chapter in 9th standard Moments textbook. Okay, and it is a very nice story. The Gift of the Maggie, The Furnace Room, Cabbages, and Kings. So this is all about his introduction. Now come to the story. The story after 20 years. What is the title of the story? After 20 years. This is the title of the story. Has the typical O. Henry twist. कौन सा है उसका टिपिकल ट्विस्ट? जो कहानी में बोलते हैं ना ट्विस्ट आया, जो हमने एंडिंग सोची होती है उससे कुछ अलग होती है. ओके, सो हैज़ द टिपिकल ओ हेनरी ट्विस्ट. हाउएवर द कैरेक्टर्स पोर्ट्रेड could make us reflect on our values. Okay, then three questions are given. These questions are not important for exam point of view, but you should write the questions. Let's come to the main chapter. After 20 years. After 20 years, 20 साल बाद. Okay, I know that horror film याद आ गई होगी. Okay, let's come to the chapter after 20 years. I want to tell the brief summary of this chapter before starting. Story बता रही हूँ मैं आप लोगों को. Okay, here in the opening, a policeman is on patrolling on his duty along a de-peopled street. एक पुलिसमैन है जो एक स्ट्रीट है जहाँ पर लोग, डी पीपल्ड स्ट्रीट यानी सुनसान जगह पर एक पुलिसमैन है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं. एंड द एटमोसफियर, द क्लाइमेट इज़ वेरी चिल्ली. बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही हैं. And only one or two shops are open, and the business place where the policeman is patrolling have been closed. At that time, he spots a man with unlighted cigar on the doorway of the hardware store. उसे क्या दिखता है? एक इंसान दिखता है जिसने जो हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे पर खड़ा है और उसके पास सिगार है जो उसने अभी तक जलाई नहीं है. ओके, ही गेट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैन दैट, फिर वो उससे पूछता है कि भाई कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों हो. सो ही स्टार्ट्स इंटरोगेशन
and comes to know that he has been waiting for his friend as they made the appointment before 20 years. What the man was doing with the cigar? The man was waiting for his friend because they have made the appointment before 20 years that they would meet after 20 years at the same place. वो लोग 20 साल के पहले मिले थे, जब अलग हुए थे 20 साल पहले, तब उन्होंने एक अपॉइंटमेंट दे दी थी एक दूसरे को कि 20 ईयर्स के बाद हम लोग सेम जगह पर मिलेंगे. ओके, दे बोथ वर फ्रेंड्स. While talking, the policeman can see the face of the waiting man closely. The policeman was talking with the man and he can see the face of the waiting man closely at that time. The waiting man tells that lastly, means before 20 years, he dined with his friend Jimmy. See here, which are the two characters? Bob and Jimmy. Okay, here Bob is waiting for Jimmy because they have made an appointment before 20 years that they would meet after 20 years at the same place at 10 o'clock. Okay, so the waiting man tells that before 20 years he dined with his friend Jimmy in Big Joe Brady's restaurant which was there at that time. उस टाइम पर वो रेस्टोरेंट वहाँ पर थी. एंड दे पार्टेड प्रोमिसिंग ईच अदर दैट दे वुड मीट आफ्टर 20 ईयर्स वॉट एवर माइट कम. कोई भी सिचुएशन हो, वो लोग कहीं पर भी होंगे, दे प्रॉमिस्ड ईच अदर दैट दे माइट कम टू मीट ईच अदर. आफ्टर लिसनिंग टू हिम द पुलिसमैन गोज अवे. ये सब सुनकर पुलिसमैन वहाँ से चले जाता है. After a few minutes, the tall man comes there and introduces himself as Jimmy. A tall man comes there and introduces himself as Jimmy. And that man, the waiting man, what was his name? Bob. Okay, so Bob was waiting for Jimmy. So after few minutes, the tall man comes there and introduces himself as Jimmy. एक टॉल इंसान आता है, वो अपने आप को जिमी बताता है. And the waiting man means Bob was happy that his friend has kept the appointment, has kept the promise. And both of them, they started walking and stood at the corner of a store. And the store was brilliant with electric lights, and the waiting man means Bob can see the newcomer's face, which he was thinking that he was Jimmy. He can see Jimmy's face and suddenly releases his arm saying you are not Jimmy Wells. लाइट में वो देखता है, वो जो इंसान आया है उसे मिलने के लिए, उसे उसका फेस देखता है और उसे क्या बोलता है कि यू आर नॉट जिमी वेल्स. एंड व्हाट द रीज़न ही इज़ गिविंग फॉर सच थिंग, गिविंग द रीज़न ही सेज दैट 20 years is not a long time to change a man's nose from a Roman to a pug. Okay, in textbook also in glossary part you can see the shape of Roman nose and the pug nose. Okay, so he tells that 20 years is not the long time to change a man's nose. इंसान की nose है वो 20 years में shape change नहीं करती है. Then the tall man declares that he has been under arrest for last 10 minutes. कि बॉब है वो अंडर अरेस्ट है 10 मिनट्स से. क्यों अंडर अरेस्ट है? ही गिव्स हिम अ नोट. उसके बाद वो उसे नोट देता है, एक चिट्ठी देता है. द नोट वॉज फ्रॉम जिमी वेल्स. और किसने दी थी वो चिट्ठी? किसने लिखी हुई थी? जिमी वेल्स, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, जो 20 years पहले वो लोग मिले थे, वो जिमी वेल्स था, उसकी चिट्ठी थी. एंड हु वॉज जिमी वेल्स? ही वॉज अ पुलिस ऑफिसर. जो पेट्रोलिंग कर रहा था ना, वो जिमी वेल्स था. The police officer who met him before. The note reads that he could identify him. Jimmy Wells identified him, but because he was his friend, he could not arrest his friend, and he had sent another policeman in plain clothes to arrest him. क्या हुआ? हम लोगों ने सोचा कि वो उसका फ्रेंड है, वो दोनों मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और हैप्पी एंडिंग हो जाएगा. बट
O. Henry is well known for the twisted एंड ट्विस्टेड स्टोरीज. ओके, हमने जो सोचा उससे बिल्कुल उल्टा हुआ है यहाँ पर कि जिमी है वो तो पुलिसमैन था, उसने अपने फ्रेंड को आइडेंटिफाई कर दिया कि बॉब है वो वांटेड है शिकागो में, न्यूयॉर्क शिकागो में बॉब है वो वांटेड है, लेकिन वो अपने फ्रेंड को अरेस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और दूसरे किसी पुलिस ऑफिसर को, पुलिसमैन को वो प्लेन क्लोथ्स में उसे अरेस्ट करने के लिए भेजता है. सो दैट्स ऑल फॉर द समरी ऑफ दिस चैप्टर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द explanation. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. Here on the beat means पेट्रोलिंग. पुलिसमैन पेट्रोलिंग करते हैं ना, रात को घूमते हैं देखने के लिए कि कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. Avenue means place, street. The policeman was on patrolling in the street and he was moving very impressively. The impressiveness was habitual and not for show. Okay, and the impressiveness, the personality itself was impressive. It was habitual, and the impressiveness was not for show. For spectators were few. Why it was not for show? Because spectators means देखने वाले. Okay, because the people were very few on that street. The time was barely 10 o'clock at night. And what was the time? Barely 10 o'clock, यानी 10 o'clock नहीं हुए थे, अभी होने वाले थे. But chilly gust of wind with a taste of rain in them had well nigh de-peopled this street. बट 10 o'clock नाइट में नहीं हुए थे, फिर भी जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और जिसमें बारिश की वजह से जो हवा ठंडी थी उसकी वजह से स्ट्रीट हैं उसमें बहुत कम लोग नज़र आ रहे थे. ओके, अंडरस्टूड द फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, नाउ सेकेंड वन. Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements now and then to cast his watchful eye adown the Pacific thoroughfare, the officer with his stalwart form and slight swagger made a fine picture of a guardian of peace. Trying doors as he went, he was passing through the doors and twirling his club. Twirling means spinning his club means stick. Okay, he was spinning his stick in many intricate and artful movements. Very complex and artistic movement में वो अपनी stick को हिला रहा था. Okay, now and then to cast his watchful eye down the Pacific thoroughfare एंड हिज आइज़ वर वेरी वॉचफुल. उसकी आइज से वो वॉच रख रहा था. पैसिफिक यानी कि बहुत ही पीसफुल थी. और थॉरोफेयर मीन्स पब्लिक रोड जो था वहाँ पर वो अपनी नज़र गड़ाए हुए था, वो सब कुछ देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था. द ऑफिसर विथ हिज स्टॉलवर्ट फॉर्म. स्टॉलवर्ट मीन्स फेथफुल. ओके, स्टॉलवर्ट मीन्स फेथफुल. एंड स्लाइट स्वैगर. स्वैगर मीन्स प्राउडफुल मैनर. फेथफुल और प्राउडफुल मैनर है वो उसकी जो पर्सनालिटी है वो यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है. ओके, उसकी फेथफुल और प्राउडफुल मैनर है वो क्या दिखा रही थी? इट शोज़ द फाइन पिक्चर ऑफ अ गार्डियन ऑफ पीस. वो सब दिखा रही थी कि एक फेथफुल पुलिस ऑफिसर, पुलिस मैन है जो सोसाइटी की पीस के लिए काम कर रहा है. ओके, द विसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स. और जो वहाँ पर जो सन्नाटा था वो कुछ टाइम से ऐसे ही था बिकॉज ऑफ द चिली गस्ट. नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट्स ऑफ अ सिगार स्टोर और एन ऑल नाइट लंच काउंटर, but the majority of the doors belonged to business places that had long since been closed. Only the lights of the cigar store were on, and
All night lunch counter was open. Only the lights can be seen of these two places. But majority of the doors belong to the business places. They have had been closed because of the chilly gust of rainy winds. Okay. When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk, and he was passing from the street through the street, and about midway of a certain block, he slowed his walk. In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. Why he was stopped? Because he has seen a man leaned at the hardware store with unlighted cigar in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly, and when he saw that man, he walked up to him, and the man spoke up quickly. It's all right, officer, he said. I'm just waiting for a friend. It's all right. Everything is all right. I'm just waiting for a friend. Who is saying this? Bob. Okay. It's an appointment made 20 years ago, because we made an appointment before 20 years. That's why I'm waiting for my friend. Sounds a little funny to you, doesn't it? Sounds a little funny to you. आपको तो मजाक लग रहा होगा, है ना? Well, I'll explain if I'd like to make certain it's all straight. Okay, I will explain everything if you like to make everything certain, because all the things are clear. About that, long ago, there used to be a restaurant where this strong store stands, Big Joe Brady's restaurant. About that long ago means before 20 years, there used to be a restaurant where this store is here, hardware store is here right now. But before 20 years, in place of this hardware store, there was Big Joe Brady's restaurant. Until 5 years ago, said the policeman. The policeman corrected the man, and he told that till before 5 years ago it was there. It was torn down then. After that, it was broken down, torn down. The man in the doorway struck a match and lit his cigar. See, this action of the man is important. The man in the doorway struck a match and lit his cigar. Why? Because this was the time when the policeman saw the face of that waiting man. Okay, the light showed a pale, square jawed face with keen eyes and a little white scare near his right eyebrow. See, the policeman observed his face. What kind of face he had? He had light a pale स्क्वायर जोड़ फेस. उसका जो जॉ था, जो जबड़ा था दांतों का, वो स्क्वायर था. इस वजह से फेस भी स्क्वायर शेप का था, पेल था, और आईज भी बहुत ही ऑब्जर्व, मतलब बहुत ही इधर वो बहुत ही ऑब्जर्व कर रहा था, इधर उधर देख रहा था. एंड द लाइट वाइट स्कैर, और उसकी जो राइट आईब्रो थी उसके पास में एक लिटिल वाइट स्कैर भी था, एक दाग भी था वाइट कलर का. हिज स्कार्फिन वॉज अ लार्ज डायमंड ऑडली सेट, और जो स्कार्फ था उस पर जो पिन लगाई हुई थी वो भी एक लार्ज डायमंड की थी, लेकिन वो ठीक से सेट नहीं थी, ऑडली सेट थी, जो अलग दिख रही थी कुछ. 20 years ago tonight, said the man. इंसान ने कहा, 20 साल पहले की रात. I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells, my best chum. Chum means friend. What is the meaning of chum? Friend. Okay, friend. Before 20 years, at this Big Joe Brady's restaurant, I dined with my best friend Jimmy Wells, and the finest chap in the world. Chap means person. What is the meaning of chap? Person. Okay. I dined with my best friend and the best person in the world, Jimmy Wells. He and I were raised here in New York.
मीन्स द स्टोरी सेटअप इज इन न्यूयॉर्क। ये स्टोरी है, ये सब जो हमें सीन बता रही है कहाँ के हैं, न्यूयॉर्क के हैं। ओके, बॉब इज सेइंग दैट बॉब एंड जिमी, ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क। दे वर रेज्ड, वो बचपन से बड़े न्यूयॉर्क में हुए। जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर, जैसे दो भाई एक साथ रहते हैं बड़े होते हैं, वैसे ही वो लोग हुए। आई वॉज 18 मीन्स बॉब वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20, और जिमी 20 ईयर्स का था। बॉब है वो 18 ईयर्स का था और जिमी उससे 2 साल बड़ा था, 20 ईयर्स का था। ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेज टू मेक माई फॉर्च्यून। उन लोगों ने साथ में खाना खाया 20 ईयर्स अगो, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग बॉब स्टार्टेड फॉर द वेस्ट टू मेक हीज फॉर्च्यून। सी यर W is given capital, so it means it signifies the western countries. ओके, न्यूयॉर्क से उसने वेस्टर्न कंट्रीज में चला गया वहाँ पर। टू मेक माई फॉर्च्यून, टू मेक वंस फॉर्च्यून मीन्स टू मेक मनी, टू अर्न मनी, ओके, टू मेक ब्राइट फ्यूचर। So Bob started for the west to earn money. He couldn't have dragged Jimmy. You couldn't have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only place on earth. जिमी को साथ में नहीं लेकर गए न्यूयॉर्क से बाहर, बिकॉज जिमी थॉट दैट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ टू लीव फॉर हिम। वेल, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from the date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have to come. Yeah, we are agreed that night that we would meet again exactly after 20 years from the date and the time, and it will no matter what conditions we are or the distance we might have to come। यानी कि हमारी क्या कंडीशन है, हम कौन सी कंडीशन में, हम दुनिया की कौन से कॉर्नर पर हैं, वो चीज़ें हैं, वो मायने नहीं रखेंगी। ओके, हम कितने भी दूर से आएंगे लेकिन हम लोग मिलेंगे, ये हमने डिसाइड किया था। We figured that in 20 years, each of us ought to have our destiny work out and our fortunes made, whatever they were going to be. And at that time, we thought that 20 years is such a long time that we will allow our destiny to work out। यानी कि हम, हमारा नसीब है, हमारा हमारी किस्मत है, वो हम आजमाएंगे। एंड कैसी भी किस्मत हो, कैसे भी हम लोग कौन सी भी कंडीशन में हैं, बट वी विल मीट अगेन आफ्टर 20 years। After listening all these things, the policeman said, "It sounds pretty interesting." हमें भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना ये सब सुनकर। Policeman also said, "It sounds pretty interesting. Rather a long time between meets, though it seems to me. Haven't you heard from your friends since you left?" The policeman asks that it is a very long time between your meets, but haven't you haven't you got any call from your friends since you left? यानी कि जब से तुमने एक दूसरे से अलग हुए हो तब से तुमने अपने फ्रेंड से कोई बातचीत नहीं हुई तुम्हारी? वेल येस, फॉर अ टाइम वी करस्पॉन्डेड। येस, कुछ समय तक तो हम लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेशन रखा, बट आफ्टर a year or two we lost track of each other. But after 1 or 2 years we lost the communication. Okay, हम लोगों की बातचीत बंद हो गई, हम लोग नहीं मिल पाए। You see, the West is a pretty big proposition and I kept hustling around over it pretty lively. You know that Western countries, they have very good chances. Big propositions means they have very good chances, business plans. And I kept hustling around means I worked rapidly in Western countries to make money and to live in good to live a good life. But I know Jimmy will meet me here if he is alive, for he always was the truest, staunchest old chap in the world. But I know that Jimmy will meet me here if he is alive, because he was the truest and staunchest means faithful old friend in this world.
I will never forget. I came 1,000 miles to stand in this door tonight, and it's worth if my old partner turns up. Okay, I covered 1,000 miles distance to meet my friend Jimmy here because we had made the agreement at that time. Students, I will explain the remaining part of this chapter in next lecture. Go through the chapter, read the chapter properly, and try to understand the things provided. Okay, we will meet in next lecture. Bye.